Can't hear you, Prasad. So you're on mute. I'm recording and streaming. Perfect. Sevanti, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Huh? The YouTube thing takes a little few more seconds to. Okay, over to you, Dr. Sewanti. Thank you. Thank you. A big thank you to Prasad and Mezzabine to bring me to this forum, and also congratulations for hosting such a forum. I think this is what brings us all together when we are able to set aside time and in casual environment discuss what is happening, and also deliberate upon what has already been done and what could be done going forward. I think that's a huge opportunity for everyone, for me, because I'm speaking from this side, and the listeners who can also ask their questions and engage in the conversation. I think at the end of the day, it has to be a conversation. So again, a big thank you for inviting me. It's an honor to be able to connect with all of you all who are here this afternoon, and thank you for all your time. So I was asked to shed some light on precision oncology. So Dr. Sewanti, just one request. We generally, I forgot to tell you, we generally do Hindi English mix. Hindi English. Meri Hindi bahut yeah. Very good. That is my weakest thought. तो अभी मैं just transition कर जाऊंगी, हिंदी में ही बात करेंगे. So basically मुझसे कोई अगर पूछता है कि मैंने ऑन्कोलॉजी क्यों किया, तो मेरा जवाब होता है for the heart of oncology, not for the science of oncology, which just means कि oncology is my passion and that is why I pursue oncology. पर इसमें precision oncology is truly where my heart lives. And what does that mean? इसका क्या मतलब है? Precision oncology का क्या मतलब है? और मैंने पहले भी एक YouTube लेक्चर दिया है हिंदी में, जिसमें कि हमने बेसिकली रिकॉर्ड किया है कि प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी क्या होता है. एसेंशियली जब हम कोई ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए डिजाइन करके बनाते हैं, उस स्पेसिफिक ट्यूमर को ज्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट उसके अराउंड डिजाइन करते हैं, उसको, उस साइंस को हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी कहते हैं. अब मुझसे पूछेंगे तो एक्चुअली ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस करने का कोई और तरीका होना ही नहीं चाहिए. कैसे ऐसे होगा कि हम उस किसी भी पेशेंट के ट्यूमर को कम समझ के ट्रीट कर दें? ऐसा तो होना नहीं चाहिए. सो precision oncology, the terminology itself is a cliche. It's just a way of defining yourself more categorically. तो हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उस पेशेंट को और उसके ट्यूमर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. वो कोशिश ऑलरेडी पैथोलॉजिस्ट कर चुके होते हैं. Pathologists have already defined what type of tumor this is. तो जैसे समझिए किसी का, अभी ही बात हो रही थी पैथोलॉजिस्ट से, एक ओवेरियन कैंसर की पेशेंट है, हमारे एडमिटेड हैं, उनको आगे हमें समझना है. तो ओवेरियन कैंसर तरह तरह का हो सकता है. कौन सी तरह का ओवेरियन कैंसर है ये हिस्टोपैथोलॉजिकली डिफाइन कर दिया गया. बट अगर कोई यंग पेशेंट है तो उसके में ओवेरियन कैंसर एक जीन होता है, उसके प्रेजेंस से भी हो सकता है. BRCA mutation can be present in a young patient with family history and advanced ovarian cancer. In that situation हमें समझने की जरूरत होती है कि BRCA mutation है कि नहीं, उस पर्टिकुलर पेशेंट के ट्यूमर को क्या डिफाइन कर रहा है, ये समझना बहुत बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि हम तब ट्रीटमेंट उसके अराउंड कर सकते हैं. लंग कैंसर, बहुत ही तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैंसर्स होते हैं. स्मोकर्स के लंग कैंसर्स अलग होते हैं, नॉन स्मोकर्स के लंग कैंसर अलग होते हैं.
नॉन स्मोकर के लंग कैंसर में पाथवेज हो सकते हैं, और उस पाथवे से अगर हम उस पाथवे की पहचान कर लें तो एडवांस लंग कैंसर का ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो सकता है, टारगेटेड थेरेपी से हो सकता है, और ज्यादा करके ये टारगेटेड थेरेपी ओरल पिल्स होते हैं। तो आज कोई स्टेज 4 लंग कैंसर से डायग्नोज होकर के मेरे पास आता है और पूछता है कि मुझे कितना टाइम है, तो मैं इमीडिएटली बोलती हूँ मैं नहीं बताऊंगी कितना टाइम है, नहीं बोलूंगी कितना टाइम है, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ बोला तो मैं गलत बोलूंगी, आई विल बी गिविंग यू द रॉन्ग आंसर। व्हाई इज दैट सो? इसलिए क्योंकि मैं अभी ट्यूमर को स्टडी नहीं किया, तो स्टेजिंग के हिसाब से अगर आंसर दूंगी तो एडवांस कैंसर पेशेंट्स डोंट लिव दैट लॉन्ग, ये जनरल एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अगेंस्ट हूं मैं, इस डेफिनेशन के खिलाफ हूं मैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अम्ब्रेला डेफिनेशन है। यहीं पे अगर हम किसी के ट्यूमर को बहुत क्लोजली स्टडी करके कैरेक्टराइज कर लेते हैं, तो ऐसे भी लंग कैंसर्स हैं जो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करेंगे, पर जिनके पाथवेज हैं, जिनको पाथवे ड्रिवन टारगेटेड थेरेपी से अगर ट्रीट किया, so they can live for years with preserved quality of life on pills that can give them the longevity. And I may just be preaching to the choir. A lot of you may already be knowing about all the treatment options that I'm describing, but smokers के lung cancers में भी immunotherapy का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां भी अगर हमने समझ लिया कि ये पाथवे, इस पाथवे से पेशेंट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ये पेशेंट इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमने अगर उनको रेगुलर कीमो से हटा के इम्यूनोथेरेपी पे डाला, तो उनकी जर्नी बहुत लंबी हो सकती है और बहुत लंबे अरसे तक वो ढंग से इम्यूनोथेरेपी पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनके पूरी डिजीज भी रेमिशन में जा सकती है। सो आई थिंक प्रिसिजन के ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कि हम ट्यूमर्स को क्लोजली समझ के और ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं पेशेंट्स का in a personalized way, in a specific way for that particular patient, so that then the patient benefits from this strategy to the maximum. उन पेशेंट के अराउंड अगर ट्रीटमेंट डिजाइन किया पेशेंट को और उनके ट्यूमर को समझ करके, तो दुनिया भर में आज ये चीज जानी गई है कि जब हम ट्रीटमेंट प्रिसाइज रूप से करते हैं तो उसमें दो चीजों की बेनिफिट होती है, एक तो सर्वाइवल और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू सेव द पेशेंट फ्रॉम एडिशनल ट्रीटमेंट एंड यू सेव द पेशेंट फ्रॉम हैविंग अ पुअरर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज वी कुड नॉट फिगर आउट, अगर हम समझ नहीं पाए कि पेशेंट को क्या एक्सप्रेशन है उनके ट्यूमर का और उनको एक जनरल ट्रीटमेंट देते हैं, उस जनरल ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी पहले पेशेंट डील करता है, हैंडल करता है, और उसके बाद फिर जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसको डील करता है। तो उससे बचने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, ज्यादातर उनके ट्यूमर को समझ करके ट्रीट करने से एक तो सर्वाइवल बढ़ती है और दूसरे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व होता है। So I have a question here. Doctor, can you, along the course of your talk, explain if precision oncology works for sarcoma? Very good question. Similarly, questions will be coming and I will be explaining in the interim or at the end of the talk. So sarcomas are actually bland tumors. Bland tumors मतलब जब हम टेस्ट करते हैं to understand the pathway, sarcomas are specifically those kind of tumors जहां बहुत obvious pathways नहीं निकल के आते, बहुत difficult है। फिर भी I always say this, exploratory testing होना ही चाहिए, because what about that small percentage of patients that can have magic with immunotherapy or targeted therapy when they have sarcoma? If you don't test, you will never find. और जो टेस्ट भी हैं वो भी सही तरह के टेस्ट होने चाहिए, सब टेस्ट एक नहीं है। One has to understand the nuances of the test. टेस्ट की बारीकी को भी समझना बहुत जरूरी है।
क्यों समझना है? समझना इसलिए है क्योंकि अगर टेस्ट में वो टेस्ट ही इंक्लूड किया हुआ नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूं, तो आप बोलेंगे आपने टेस्ट करा लिया, पर मेरे पास जब रिपोर्ट आएगी तो वो चीज टेस्ट नहीं की हुई है और महीनों आपने ये बिलीव किया कि आपने टेस्ट तो करा लिया। तो अभी इस मीटिंग में आने के पहले मैं एक केस इवैल्यूएट कर रही थी। वो यंग गर्ल जिनको कि वाइड स्प्रेड ब्रेस्ट कैंसर है, काफी सारे ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, अब वो मेरे पास आए हैं और अभी भी चांस है तो केस को ढंग से स्टडी किया जाए कि कौन सा पाथवे ड्राइव कर रहा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द डॉक्टर, व्हाट इज अ पाथवे? सो cancers are driven by certain pathways through which the signals go. अब मैं इसको एक आम आदमी के लैंग्वेज में, मेरी जो मेंटोर है, मेरी जो गुरु हैं, उनके लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी। तो आपके घर से आपके वर्क प्लेस जाने के बड़े सारे रास्ते होते हैं। उसी तरह से कैंसर को पढ़ने, कैंसर को ग्रो करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर आप एक रास्ता ब्लॉक करेंगे तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, दूसरा रास्ता ब्लॉक करेंगे तो तीसरा रास्ता खुल जाता है। पर उनमें से मेन रास्ता कौन सा है, मेन हाईवे कौन सा है जिसको ब्लॉक करने से 90% चांस है कि वो कैंसर ब्लॉक हो जाए, वैसा हाईवे अगर हम ढूंढ लेते हैं टेस्टिंग करके, उसको हम पाथवे बोलते हैं। सो वर्क से घर जाने के लिए या घर से वर्क पे आने के लिए एक मेन रास्ता है, वही हाईवे यू टेक एवरी डे, दैट मे बी योर सेंट्रल हाईवे, and similarly there may be a central highway for the cancer growth. That central highway is pathway. There could be multiple pathway, पर एक pathway उसमें prominent है और लिटरेचर से, डेटा से, रिसर्च से ये समझ गया है अभी तक कि यही पाथवे इस पर्टिकुलर पेशेंट में मेन होगा। उस प्रिडिक्शन से, उस टेस्ट से वो प्रिडिक्शन आती है, उस प्रिडिक्शन से आपको रास्ता मिलता है, पाथवे मिलता है, उस पाथवे को ब्लॉक करने से रिजल्ट्स आते हैं। सो कैंसर्स कैन बी having multiple pathways and one prominent pathway or a couple of prominent pathway driving the cancer. उसकी स्टडी और उसको कवर करने को हम प्रिसिजन कहते हैं, because you are then going through that prominent pathway. किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आप कोई सुराख ढूंढते हैं, you look for an evidence. And I say all the time that I feel like a detective because I'm looking for that evidence. And I'm looking and I'm looking and I'm looking to find that evidence. Once you found that evidence, you can go and attack that evidence, block that pathway, and get your results. In this exercise, बड़े सारे पाथवे हैं जिन पे कि ऑलरेडी लोग चल चुके हैं। दीज आर नॉट न्यू पाथवेज। सो यू नो कि अगर इसको ब्लॉक करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। सो लंग कैंसर में दो चार पाथवेज में बताती हूँ, आपने सुने होंगे पहले। EGFR पाथवे, ALK पाथवे, ROS पाथवे, MET पाथवे, RET पाथवे। So all lung cancers are not the same. So what is the reality of today? Worldwide, 2/3, 60% cancers worldwide आज भी advanced stage या later stages में diagnose होते हैं, stage 3, stage 4 में diagnose होते हैं। तो अब अगर उनको हम कट करके नहीं निकाल सकते, रेडिएट करके बर्न नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट्स को हमें कैंसर होते हुए ट्रीट करना है। And a lot of such cancers can be treated
easily in a simpler way and a more efficacious way. अगर आप चीज को समझ के अटैक करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे, और अगर चीज को समझ करके आपने अटैक किया और उसका पाथवे ढूंढ करके उस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो लॉन्जेविटी भी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप स्पेसिफिक ड्रग्स दे रहे हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसको नए तरीके से अप्लाई किया गया है अभी। पुराना क्यों कॉन्सेप्ट है? आपने सुना होगा कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड टाइप होता है ना, सबका एक ब्लड टाइप होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, नेगेटिव। सो क्या है उसमें? उसमें हम ब्लड का टाइप देखते हैं। उसी तरह से जब हम कैंसर के अंदर का स्पेसिफिक्स सारे डिटेल्स को स्टडी करके उसके अराउंड ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ज्यादा बारीकी से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट को प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और इसमें सेल के अंदर का जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, उसके स्टडी को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी के एक्सपीरियंस होते हैं, एंड वी देन रेकमेंड डूइंग टेस्ट विद इन द सेल, and that test could be DNA, RNA based testing. इसके बियॉन्ड भी मैं टेस्ट करती हूँ, मैं कीमो सेंसिटिविटी टेस्ट भी करती हूँ इन द लैब, और उससे अगर इंफॉर्मेशन आए हाउ टू ट्रीट द पेशेंट एनी बेटर तो वो मैं ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक तक लाती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं लूंगी, उसके बाद आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन few facts about targeted therapy and immunotherapy. So I'm just reading the questions. Someone has posted on neuroblastoma, which I will answer. Also about recurrent head and neck. So there is one question which I think I should take up front, which is about the types of tests that we do in trying to understand precision directed approach. तो लोग मेरे से पूछते हैं, patient comes in and I have analyzed the patient and I'm trying to see how to strategize next. तो टेस्ट कराना पड़ता है। अब टेस्ट जो है वो ट्यूमर टिश्यू पे होता है। तो 2-3 मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूंगी। एक मिथ है कि अगर बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। नहीं, बायोप्सी कराने से कैंसर की आइडेंटिफिकेशन होगी, कैंसर को प्रॉपर तरह से हम जानेंगे, उनका हम टेस्ट कर सकेंगे और करेक्ट ट्रीटमेंट कर सकेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। So tissue is very critical. We also do something called liquid biopsy, which is blood draw, blood test, जिसमें कि हम circulating tumor DNA और circulating tumor cells को लेकर के उसका स्टडी करते हैं, और वो भी आज बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, काफी इंफॉर्मेशन उसी से मिल जा सकती है। But the ideal is to get the tissue. Still the ideal is to get the tissue. I may even request or recommend to do longitudinal. शुरू में करा, फिर उसके बाद डिजीज का कोर्स अगर चेंज कर गया तो फिर से करा और फिर से करा। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर साल भर 1 year has gone by since the last study, I may recommend to do another test to do and understand the tumor better. Some of the tests have to be done on live tumor tissue, like chemosensitivity analysis actually requires live tumor tissue. You cannot do it on old tumor tissue or the results won't come that good. Now, what test would I recommend? So, जब हम टेस्ट के बगैर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट जा सकता है। बहुत बार
हम जेनेरिक ट्रीटमेंट करते हैं, वन साइज फिट्स ऑल ट्रीटमेंट करते हैं, अदर वे आई कॉल इट बकेट कीमोथेरेपी करते हैं। ऐसे नहीं करना है और आगे जाके और उसको वेरी क्लोजली स्टडी करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है। उसके लिए जो हम टेस्ट ऑर्डर करते हैं, दैट्स कॉल्ड mostly a next generation sequencing test. Now next generation sequencing, patients come to me and they say NGS kara liya. NGS is just a very routine terminology. It is the method of doing the testing. With that method, you can do a 20 gene panel, a 40 gene panel, a 400 gene panel, or a 1000 gene panel. So the patient doesn't know. They just know the technique with which the test has been done. कि NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट करा लिया। पॉइंट वो नहीं है, टेस्ट को सही से समझना है और एक ढंग का टेस्ट कराना है जिससे कि आंसर्स प्रॉपर आ जाएं। तो यहाँ एक क्वेश्चन था, आई थिंक डॉक्टर मुरली देसाई हैज आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टेस्ट, कोर लंग पैनल, फाउंडेशन 1 एंड हाउ टू डिसाइड। सो वेरी गुड क्वेश्चन। I think we have to depend a lot on our doctors, but I also feel empowering the patients is also very critical. तो छोटा पैनल होता है लंग पैनल, लेकिन most comprehensive panel is a comprehensive genomic panel. So I have moved from small panels to comprehensive gene panels, which are also very modestly expensive today and can be easily prescribed for patients with modest costs. So I'm a big proponent of comprehensive genomic panel because tissue इतना सा होता है, उसमें आपको एक चांस मिलेगा टेस्ट करने का। अगर आपने 20 जीन किया तो उतना ही आंसर है। अगर आपने ब्रॉड पैनल किया जिसमें कि डीएनए और आरएनए देखा जा रहा है, तो वो एक बार में आपको आंसर्स मिल जाते हैं। अब क्यों करना है वो बड़ा पैनल, क्यों करना है? इवन फॉर लंग कैंसर क्यों करना है? क्योंकि अगर पाथवे 20 जीन्स आपने किया और पाथवे आपको पता चल गया, आपको फिर भी ये नहीं पता चलेगा कि उस पाथवे को ओपोज करने वाले, कट करने वाले और क्या पाथवेज हैं। वो आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक पैनल करने से ही पता चलेगा। दोज ऑफ अस हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग, वी नो कि एक जीन का पता चल जाने से नहीं होने को है। अगर कोई EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर है, उसको आपने एक टैबलेट खिलाई, EGFR इनहिबिटर की टैबलेट खिला दी, उसको एक पेशेंट सेवरल इयर्स चला जाता है, उसको रिलैप्स नहीं होता है। दूसरा पेशेंट सेवरल मंथ्स में ही रिलैप्स हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पाथवे के अलावा दूसरे और बड़े सारे पाथवे थे जिनको कि हमने देखा ही नहीं। हमने सोच लिया कि बस यही पाथवे। इसी में अगर हमने ब्रॉड टेस्टिंग करी, तो ब्रॉड टेस्टिंग में, साइट के टेस्ट में और सारे पाथवे जो कि there are some pathways that help and there are some pathways that hinder, which means कोई सारे पाथवे मेन पाथवे को मदद करेंगे, कोई सारे पाथवे मेन पाथवे को अपोज करेंगे। उसका पहचान, उसकी पहचान शुरू में ही आपको हो जाएगी and you will be prepared then and you will know what to expect and whether there is a red flag, अगर कोई प्रॉब्लम है, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आप पहले से आगाह हो जाएंगे। और अगर आगाह हो जाएंगे तो आप उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बना लेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। यू हैव टू बी रेडी विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लान एज यू अटैक द डिजीज राइट अप फ्रंट। यू कैन नॉट वेट कि भाई अब अगला प्रॉब्लम आएगा तब देखेंगे, वो नहीं। तो शुरू में जब आप broadest panel test करते हैं, you prepare yourself for what is going to happen next and how to strategize the next level of therapy if needed. उसके preparation के लिए broad panel testing बहुत जरूरी है।
आज से 6 साल पहले जब मैं इंडिया आई थी, तो जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रही थी, उसमें 15 जीन का पैनल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था लैब में। तभी मैंने कह दिया था, आप मत इंट्रोड्यूस करो क्योंकि मैं नहीं करूंगी, आई विल नॉट राइट दिस टेस्ट, बिकॉज तभी मेरी बिलीफ में ये आ चुका था कि सिर्फ एक पाथवे जान लेने से या 15 जीन पढ़ लेने से नहीं समझ में आएगा। कैंसर इज वे बियॉन्ड सिंगल जीन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द एनवायरमेंट, सारे पाथवेज को समझ के आपको उसका सेंट्रल पाथवे समझ में आता है और उसी के अराउंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, हेल्थी टिश्यू यूज करते हैं कि नहीं एज अ कंट्रोल? सो व्हेन वी डू रूटीन कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग, वी आर नॉट taking matched normals from that patient, पर मैच नॉर्मल्स का टेस्ट ऑलरेडी पहले किया जा चुका है। देयर आर डेटाबेसेस ऑफ मैच नॉर्मल जिससे कंपेयर करके हम करंट टेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। tests that like Foundation 1 or CARIS or comprehensive genomic profiling with Indian labs like MedGenome, Datar Genomics, Strand Genomics, all these labs are comparing to the databases of what looks like normal variants. And they then go through an exclusion into finding what may be contributing to the cancer causation. But when you go for broadest panel, then you also give matched normals. And that's where the genomic companies will ask for either a blood test or a saliva swab. And that is when you're giving your matched normal for comparison directly by the genomic company. So those are even broader tests than what I was talking about. And even those could get done to give you the answer. So that's about the testing. Now about the treatment. Changing gears, trying to answer some of the questions, I'm getting bombarded by questions. So I'll not be able to take all questions as I go along. I'll try to answer them on the side. I think there are already, I think 50 questions come in. So I can't read all of them, but I'm trying to answer as I go along. So let me tell you something about the treatment strategy. तो कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं? तो हमने सालों से सुना हुआ है सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन कर सकते हैं। डॉक्टर दांडेकर इज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ही इज अ सेलिब्रेटेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम आवर सेंटर। अब हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं। सो आई एम अ कीमोथेरेपी डॉक्टर, I've always identified myself as a chemotherapy doctor, but I do much more than chemotherapy now. Thankfully, it's a happy time for people like myself, because there's a lot more that you can do for the patient. As you all have already probably understood, chemotherapy is a very tough thing to deliver. So chemotherapy, but at the same time, I want to say this, that it is also backbone of huge amounts of our treatment, even till today. So we cannot belittle that. Having said that, कोई तरीका है जिससे कि हम कीमोथेरेपी को और अच्छे से दे सकें ताकि हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव्ड हों, अच्छे रिजल्ट्स हों और अच्छे रिजल्ट्स हों। एक दूसरा, कीमोथेरेपी को हम और कैसे अच्छे से टॉलरेट करा सकें, उसके साइड इफेक्ट्स कैसे कम हो जाएं। ये हो गई कीमो की बात। और बात है कि अगर हम ट्यूमर के टारगेट्स को अच्छे से फिगर आउट करें तो हम टारगेटेड थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट। अगर वो पेशेंट में टारगेट बायोमार्कर है कि वो इम्यूनोथेरेपी से बेनिफिट करेगा तो हम इम्यूनोथेरेपी दे सकें पेशेंट को। तो ये स्टडी टेस्ट से ही होती है, टेस्ट करके ही पता चलता है। बगैर टेस्ट के इसका इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा, और टेस्ट करेंगे तो ही ये आंसर मिलेगा। और मैं ये टेस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट अगर कर दिया भी तो उसके पैरेलल में तुरंत immediately I do the testing. Why do I do the testing? Because जब हम पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं तो वीकनेस आती है, तकलीफ आती है। कीमोथेरेपी से जो जेनेरिक ट्रीटमेंट है उससे तकलीफ आती है। थोड़े दिन में ही पेशेंट को कमजोरी आ सकती है, थोड़े दिन में ही पेशेंट का डिजीज बढ़ सकता है। अगर आप
उसके डिजीज को, पेशेंट के डिजीज को अगर आपने, if you don't understand the disease carefully, you may miss the opportunity to treat the best. You may lose the life and you may lose important time. So I believe in doing the testing right at get go in parallel to starting the treatment. इधर treatment start किया, उधर testing start किया. Test के results आने में 10 to 15 days लगते हैं. तब तक आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया. अगर अर्जेंट है तो, अगर अर्जेंट नहीं है तो कई बार मैं वेट भी करती हूँ. आई विल वेट फॉर द टेस्ट रिजल्ट्स टू कम बैक. इफ द पेशेंट इज नॉट सिम्टोमेटिक, तकलीफ नहीं है ज्यादा, थोड़ा वेट कर सकते हैं ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं वेट करती हूँ. अब जस्ट सम डिस्क्रिप्शंस अबाउट टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी वेरी क्विकली. सो टारगेटेड थेरेपी इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाईवे है, मल्टीपल हाईवेज, उसमें से एक मेन हाईवे है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स अवेलेबल हैं, मोस्टली ओरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, उनको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं. देयर आर सम आईवी इंट्रावीनस टारगेटेड थेरेपी आल्सो, जिनको आईवी में कीमो के साथ चढ़ाया जाता है. पर ज्यादा करके टारगेटेड थेरेपी जब हम बोलते हैं तो वो ओरल होता है. Mostly they are easier to handle. They can be taken at home. Patient को उसके लिए हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता है. Patient targeted therapy, hormone therapy, ये सारी treatments घर पे ले सकते हैं. And generally we see such patients every 3 months. Blood test करके आप भेजो मुझे, मैं देख लूंगी on any medium. And 3 months पे हम patients को बुलाते हैं स्कैन करके और देखते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट काम कर रही है कि नहीं कर रही है. ये टारगेटेड थेरेपी है. टारगेटेड थेरेपी इन जनरल आर वेरी वेल टॉलरेटेड. इसमें साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के जैसे नहीं होते हैं. हेयर लॉस नहीं होता है, नोजिया नहीं होता है इन जनरल, एंड मच बेटर टॉलरेटेड दैन कीमोथेरेपी. What is immunotherapy? Immunotherapy is the new kid on the block. But still, I have been practicing immunotherapy now for more than a decade. So 10, 12, 15 साल हो गए when one started practicing immunotherapy because of having worked at, so I was a professor in Harvard, and there I worked with early drug development. So early drugs that were being in clinical trials, I've been privy to those drugs from there. And so I have been working with immunotherapy for a long time. So immunotherapy में क्या करते हैं? Immunotherapy में you increase body's immune system's ability to fight cancer. When you embolden our own T cells to eat up the cancer cells with help of certain medications, we in our oncology practice, we call them immunotherapy. अब इम्यूनोथेरेपी के बहुत सारे वर्जन्स आपको इंडिया में मिलेंगे. दोज वर्जन्स आर नॉट फ्रंट लाइन वर्जन्स. जो इम्यूनोथेरेपी की बात मैं कर रही हूँ वो एविडेंस बेस्ड है. उसके ऊपर several thousand पेशेंट्स पे डेकेड लॉन्ग रिसर्च हो चुका है. 10 साल 20 साल से रिसर्च हो चुका है, एंड दे हैव बीन FDA approved. So I strongly appeal that if someone talks about immunotherapy, you must go to the right channel, go to the right people, and you have to go and look at the drugs that were FDA approved. So सही center पे, tertiary care cancer center पे आप जाएंगे, FDA approved drugs के लिए जाएंगे, वही drugs आपको सीख करना है. नहीं तो बहुत सारे गलत इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स भी दिए जा रहे हैं इंडिया में in centers that are approved by the government and are functioning openly. वहां नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे there is time, energy, money spent on drugs that are not beneficial and they have not been proven to have efficacy. इनकी efficacy prove नहीं हुई है. ये काम करते हैं कैंसर में, ये प्रूव नहीं हुई है, इनके पास एविडेंस नहीं है. एंड उस सिचुएशन में हम जब इम्यूनोथेरेपी करके लाखों रुपए देते हैं, वो गलत. So what immunotherapy options am I talking about? I'm talking about frontline immunotherapy option called immune checkpoint inhibitor. तो अगर किसी ने
कभी भी रेलवे का चेक पॉइंट क्रॉस किया है, then you understand what I mean. So in movies, we see there is a train coming and the bar is down to allow the train to pass and then everybody will go. That is a checkpoint. Another checkpoint is when you have police doing checking at a border, right? We've all seen that shot in the movies. And that is a checkpoint. So when there is a checkpoint, things can be organized in a certain way. In a similar checkpoint model, T cells in a human being and tumor cells in that particular patient are across the checkpoint. They need to come together for the T cells to eat up the tumor cells. And that coming together is facilitated by these drugs called immune checkpoint inhibitor. The other kind of immunotherapy is also cancer vaccines that are being developed. They're not ready for prime time utilization. They're not FDA approved. And the other kind of immunotherapy is CAR T cell therapy that is also available abroad for blood cancers. Coming to India through Tata Memorial, they're doing some very eminent research. We are also big propagators of immune checkpoint inhibitors, other kinds of immunotherapy, and I ran 22 clinical trials in India, and I will be running more at Reliance Foundation Hospital going forward, where very, very highly sought out immunotherapy drugs are presented to the patients to facilitate access to novel drugs. नए drugs जो cutting edge drugs हैं उनके access के लिए ये हम trials लाते हैं so that we can present these options to our patients. So I think we have now covered precision, how to approach precision, tests. You have to invest time, energy, money in doing the test so that शुरू में test करना है so that you understand your cancer better. And treatment planning can be done in an informed way rather than doing a generic treatment planning. And doing bucket chemotherapy and umbrella treatment, and all those days are gone when one size fits all kind of approach worked. You really need to be educated about the patient's tumor and direct the therapy accordingly. I think we only have 10 plus minutes with us now, and I don't even know how many questions we have. Prasad, how are you going to do the questions? So, Dr. Sewanti, what I can do is to help you out. I can read out some of the questions because many of the points you have already covered. Yeah. And there are some questions which are very specific to a particular question, which of course we cannot take in a public forum. तो मैं वो पेशेंट के लिए जिनको खुद के बारे में पूछना है उनके लिए मैंने डॉक्टर सेवंती के सेक्रेटरी का टेलीफोन नंबर पोस्ट किया है. So you can call her up and block a time and then either meet her in person or online. तो जैसे है कि मिस्टर धरवोरा इज आस्किंग, वो भी थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है. Mr. Shailesh Patel is asking that he has had several recurrences and he has taken multiple chemotherapy and radiotherapy. So now he's on Keytruda, and he's asking if there is anybody else also in the similar situation. So Mr. Patel, we do have many patients who are in the similar situation also. So let me see what is the next question. What I can do is I've saved the chat, and what I can do is actually, if we have ability to pull up the email addresses, I can one by one answer these patients. Yeah, sure. So there is one question from Tina. She's saying that she's finished chemotherapy for ovarian cancer. What precautions should she take to avoid relapse? She's BRCA positive. So very good question. And actually, two things we were just discussing in a molecular tumor board this morning, and we were discussing regarding a patient. So it's very important to understand whether the BRCA is somatic or germline. So there can be two types of BRCA, one that runs in the family, one that is only in the tumor, which kind it is.
and important to also target the BRCA with maintenance therapy. I'm sure she's on something as maintenance in terms of BRCA pathway inhibition. So that these drugs are called PARP inhibitor, and you can put the patient on PARP inhibitor to as maintenance therapy, decrease the chances of recurrence. So that's a very very well established approach for BRCA positive patient. The reason why I said germline or somatic is because for her, it's okay to treat with BRCA-directed therapy. But for others, for the family and screening, it will be important to understand germline or somatic, and accordingly, we can advise the screening for the family. So Tina, if you are not on PARP inhibitor therapy, then you may want to check with your medical oncologist or get in touch with Dr. Sewanti for starting that treatment. The next question we have is from Ankur, that patient who have breast metastasis to lung and brain. Can we do chemotherapy and immunotherapy together in that situation? We know that the immunotherapy does have a blood-brain barrier penetration. Several chemotherapy drugs will not have a blood-brain barrier penetration. It will be important to understand the specifics of the treatment development, but chemo-immuno can be given together. Whether the chemotherapy that is being offered is the one that I would also offer is a matter of discussion and more evaluation. But other than that, in terms of delivery, both drugs can be given together. Okay. And Vidya is asking us, is it possible to take targeted therapy and immunotherapy to avoid chemotherapy, or chemo has to be taken by everyone irrespective of type of tumor? So there are several cancers where this combination has worked, the combination of targeted therapy, immunotherapy. But there are other malignancies where you cannot give targeted therapy and immunotherapy and get away with it. So again, like I said, each patient is special. Each treatment has to be personalized and specifically designed after understanding the case. Targeted therapy, immunotherapy is being utilized in many, many malignancies, not as a result, as an approach to avoid chemotherapy, but as a best case scenario and as a best approach for treating that particular person's cancer. So I would be happy to sort of look over the case and come out with my recommendation, but the combination of target and immuno is definitely possible. So there was a glitch in the settings which made it possible for anyone to unmute themselves. I have corrected that, and I was like thinking कि ये meeting इतनी एकदम क्यों है, कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है? So that was a setting problem. Sorry. So if there is anybody who wants to ask a question, please unmute yourself and ask question to Dr. Sewanti. We still have a few more minutes left. So Deepshika has asked here, what are the tests done for to figure out the targeted and immunotherapy option for adenocarcinoma lung? So comprehensive genomic profiling usually includes DNA, RNA. So DNA mutations, RNA alterations that can be rearrangements that can be picked up, fusions that can be picked up through RNA testing. And then there's something called microsatellite instability, tumor mutation burden, all of that should be included. And finally, PD-L1 testing is also very critical. So as an example, many companies are running the comprehensive genomic profile testing today. And to name one would not be correct from my side. It would just be propagating one particular company. So, many international companies, many local companies, you just need to figure out that they have the DNA, RNA component, both. No longer is it efficient enough to just do the DNA testing for lung cancers because there are many, many RNA fusions that can be targeted with an oral pill. PD-L1 should also be included for biomarker realization for immunotherapy. Tumor mutation burden and microsatellite instability are also very critical. I have a question, Dr. Sewanti. I have stopped my chemo about a year and a half back and have taken several radiation as and when needed with Dr. Dandekar. Basically, I had severe side effect with my first round of chemo. And of course, I adore my doctor, the one that I was working with, oncologist.
Dr. Pinto, maybe you know of him. Yes. Yeah. And so one of the questions we had asked when, I stopped my second round of chemo was if I could go for immunotherapy, and he had suggested that I was not a candidate for that. So I wanted to understand in detail about that. So I've said this many times. When we discuss immunotherapy application in frontline setting, it may be a different question and different context. Frontline setting, there may not be enough data, and I don't know your specific pregnancy and things, but I'm just answering in a generic way. So frontline setting, there may or may not be a reason to offer immunotherapy to you. But when we get to third, fourth, fifth line setting, which means you've gone through multiple lines of therapy, and the data in next line actually depletes. We don't have that many trials for many malignancies, and you don't have standard of care options in second, third line setting. What do we do for such patients in the US? We offer clinical trials, and those clinical trials may absolutely include immunotherapy. So fast forward to India. India, you don't have that many clinical trials in advanced line settings. So what do? If the patient is able to afford and it is feasible to deliver immunotherapy, the only test to whether immunotherapy is going to work, the final test, unfortunately, as of today in India, in the Indian context, the final test for if an immunotherapy is going to work in a patient or not is by giving it to the patient. So I would obviously have to assess the case more carefully, but in next line and the next line, I actually don't hold back. I figure out a combination where one portion is more active treatment and the other portion could actually be something that I build on, and that building on can be done with immunotherapy drug, because combinations of immunotherapy, targeted therapy, immunotherapy, chemotherapy, immunotherapy, dual immunotherapy are already out in many cancers, and one should draw information from other malignancies in different phase of clinical trials and offer to the patient logically wherever scientific logic allows. Understand. Thank you so much. He wants to ask a question. Hello. Yeah, please. Hello. हाँ सेवंती मैम गुड आफ्टरनून. Good afternoon. सेवंती मैम मेरा भाई है जिसका अभी ट्रीटमेंट वो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है और उसका न्यूरोब्लास्टोमा रिलैप्स्ड हुआ है और एस्टेशनल रोब्लास्टोमा सीएनएस कार्नियल मेट्स हुआ है अभी. तो उन्होंने अभी 3 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है कीमो की और 4th अभी कल नहीं परसों से मैम स्टार्ट होगा. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस मैम? सो न्यूरोब्लास्टोमा का रिलैप्स में भी देयर कुड बी अ वेरी हाई चांस टू रिस्पॉन्स फ्रॉम ट्रीटमेंट. So neuroblastomas also, even after relapse, you have to, basically go with the protocols that have been proposed. Having said that, in high risk neuroblastoma, where initially जो शुरू के treatment options हैं वो propose किए गए हैं, उससे नहीं काम अगर होता है, then there are certain targeted therapy options that can be entertained and looked at, जो कि कॉम्बिनेशन है एक तरह का इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी कॉम्बिनेशन. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि बना के उस स्पेसिफिक डिजीज के लिए तैयार की गई है और उस ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है एक वो. दूसरा ऑप्शन फॉर एनी रेयर ट्यूमर्स, आई ऑलवेज से दिस, स्पेशली इन रिलैप्स केस, हमें वो टेस्ट करके देखना होता है कि और क्या ऑप्शंस हैं. जब रेयर केस होता है तो रेयर केस के ग्रोथ को इतने अच्छे से लिटरेचर में भी डिफाइन नहीं किया गया रहता है, तो वहां पे एक्सप्लोरेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है.
do an exploratory testing to understand that particular person's tumor, and then you design treatment according to what is being expressed in terms of the pathway that is driving the tumor. ओके तो मैम आप अभी हाँ मैडम, तो मैं रेकमेंड करती हूँ ऐसे सिचुएशंस में कि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको करें, और साइड में आप डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए टेस्टिंग साइड में इन पैरेलल करें, so that if the treatment works, great. If the treatment doesn't work within this time period, you will have additional information to how to treat the cancer. If the plan A does not work, then you have your plan B ready and you have your plan C ready. Because in these situations, tumor is always evolving. And if you're not hitting the nail on its head, then you have to be prepared for what is my next experiment. How am I going to get this, beat this? What is my next strategy? और वो तैयार रखना है, because unfortunately ये प्रोसेस को करने का बाहर, बॉडी के बाहर इतने ऑप्शंस नहीं होते. सो बाहर आप क्या कर सकते हैं विदाउट सब्जेक्टिंग द पेशेंट टू सो मच ऑफ थेरेपी रिलेटेड ट्रॉमा? इसके बाहर आप क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्म योर स्ट्रैटेजी बेटर. और उस टेस्ट में मैं एक्चुअली सिर्फ डीएनए आरएनए तक नहीं रहती हूँ, मैं उसके बियॉन्ड भी टेस्ट करती हूँ. सो आई एम वन ऑफ द believers in chemosensitivity analysis also, क्योंकि rare tumors, if you don't find a pathway, क्योंकि हमारे science is still limited, right? We are only looking for let's say 500 pathways when we have 20,000 cancer genes. So if you are only looking for 500 pathways and you don't have understanding beyond that, then how do you treat the patient in their lifetime? In that situation, I say, do the chemosensitivity analysis in the petri dish, understand whatever is coming out of that, and try to improvise the therapy to be more impactful for the patient. So आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो आप करिए. मैं बिलीव करती हूँ जल्दी असेसमेंट, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स असेसमेंट भी मैं देर से नहीं करना चाहती हूँ, जल्दी करना चाहती हूँ, दैट यू डोंट लूज टाइम. बहुत ज्यादा डिजीज प्रोग्रेस ना हो जाए. आपने नई थेरेपी स्टार्ट करी, इसे असेस करिए काम कर रहा है कि नहीं. At an early assessment, then you're able to figure out if the strategy is working, great. If it's not working, you re-strategize. And you, in the meantime, prepare yourself with more answers. Ma'am, we have done MRI and it's working. So, yes, ma'am. And so recommend to abandon therapy. Then you must continue as per the protocol. Yes, abandon therapy. No, you continue the treatment. Okay. Treatment is working. You please continue the treatment. Don't abandon. Okay, ma'am. Last question from I don't know the name of the person. It's called Jimmy. That's the last question. The last. Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Hi, sir. Hi. Can you hear me? Yes. Yes. Yes, we can hear you. Okay, ma'am. Actually, मैं पूछना चाह रही थी, मुझे actually 2020 में clear cell ovarian cancer diagnose हुआ. Then मैं operate हुआ. उसके बाद मैंने 6 cycle chemo लिया. During chemo मुझे पता चला कि मेरे spleen पे कुछ lesion है. तो वो पहले तो benign थे. Then after that first follow up में मुझे पता चला कि वो cancerous है. Then I went to surgery, secondary cytoreduction, and then 6 cycle chemo. वो अभी फिनिश हुआ है नवंबर में. अभी मैं टारगेट थेरेपी पे हूँ. बेविसिटास इंजेक्शन है 800 मिलीग्राम, उस पे टारगेटेड थेरेपी. मेरे ऑन्को मेडिकल ने बोला था कि आप 1 साल के लिए लो, तो 4 डोज और बची है. once a month लगता है मैम. मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि ना जस्ट बिकॉज ऑफ आई सफर्ड लॉट्स मैम, मैं जैसे जस्ट सडन 6 महीने में ही कैंसर कम बैक हुआ. सारा कुछ मैंने फॉलो वैसे ही किया जैसे डॉक्टर ने बोला उसके बाद भी. बट अभी जस्ट टारगेट थेरेपी पे हूँ. तो मैम क्या मतलब थोड़ा फनी लगेगा क्वेश्चन, बट क्या पॉसिबल है मैम जैसे कि डिजीज कम बैक नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ, मेरे डॉक्टर ने यही बोला कि आप टारगेट थेरेपी लीजिए साल भर के लिए, आपका डिजीज कम बैक जल्दी नहीं होगा.
तो आई एम जस्ट वांट टू नो मैम कि टारगेट थेरेपी मतलब एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं, आपने बताया भी होगा कि क्या है, और मेरे केस में ये टारगेट थेरेपी काम करेगी क्या? स्प्लीनिक मेरे को एडिनोकार्सिनोमा क्लियर सेल डायग्नोस हुआ था, तो आई जस्ट वांट टू नो मैम. Very good question. So let me just quickly tell you a couple of things about this particular situation. So disease वापस आ गई, डिजीज वापस आ गई और क्लियर सेल है. क्लियर सेल इज एक्चुअली अ रेयर टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर. फ्रंट लाइन लार्जर कोहॉर्ट इज हाई ग्रेड सीरियस ओवेरियन कैंसर. क्लियर सेल में risk of coming back is also higher. It's a tougher disease, and that's why I'm not surprised that it came back. Then your oncologist has taken the right path. They have put you on a targeted therapy जो कि most ovarian cancers के recurrence risk को घटाते हैं. तो आप क्लियर सेल वेरिएंट में भी वो घटाते हैं, इसलिए सही ट्रीटमेंट आपको दिया गया. 1 साल के लिए डाला गया उस पे. बाहर के देशों में जहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज नॉट ऑन आवर ओन पॉकेट, यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू द मेंटेनेंस टिल relapse, and many patients will just continue to be on maintenance therapy for very long periods of time. The other thing is what is your age, and have you been tested for hereditary breast ovarian cancer syndrome? No ma'am, no ma'am, I am just 40 एंड मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं ब्राका टेस्ट भी कराऊं या ना कराऊं. मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, और अभी जब लास्ट में फॉलोअप में गई, बॉडी एनईडी है, बट डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको एक एचडीआर पैनल का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें इन फ्यूचर के लिए हम लुकिंग फॉरवर्ड रहे कि अगर कैंसर कम बैक होता है तो कौन सी ड्रग यूज करें. बट आई एम क्वाइट अफ्रेड मैम, मतलब डर लग रहा है कि कराऊं कि नहीं कराऊं. टारगेट थेरेपी अब खत्म होने वाली है, 4 साइकिल बचे हैं. कराएं, बहुत जरूरी है उसको कराना. दुश्मन को नहीं जानने से दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं होता है. You have to know what caused your disease, you have to know what caused the relapse. जल्दी से करा लेना चाहिए. और HRD टेस्टिंग इज डन ऑन टिश्यू, जो आपके सर्जिकल सैंपल निकला था उसमें, एंड इट जस्ट डजंट ओपन द डोर फॉर आगे का क्या करना है. अभी के लिए भी आपका डोर खुलता है. आज अगर कैंसर एनईडी है, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर. यू हैव टू प्रिपेयर, एंड इन दैट प्रिपरेशन वन ऑफ द थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली नीड टू नो is what drove in your cancer, what caused the cancer in first place, what caused the relapse in the second place, and how can you secure yourself better. बाहर अगर स्टोर मारा हो, आंख बंद कर लेंगे तो उससे स्टोर नहीं खत्म हो जाएगा. So you have to know, and if the HRD is negative, even then you know that you are HRD negative, then the preparation is different. So why did I say plan A, B, and C? Because it may not be implementable right now. You may not need to implement it right now, but you always need to know how your cancer is defined, what is the biology, what is the signature. हम अपना नाम हम जानते हैं, और हम नाम में पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम. उसी तरह से कैंसर का भी कैरेक्टराइजेशन है, और कैंसर के जीनोमिक कैरेक्टराइजेशंस हैं, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन है. जब तक हम उसको स्टडी करके उसके अराउंड ट्रीटमेंट प्लान नहीं करेंगे, इट्स अ वेरी जेनेरिक ट्रीटमेंट. सो प्लीज लिसन टू योर डॉक्टर, प्लीज गेट द टेस्टिंग डन. टारगेट तो मैम जैसे थोड़ा सा ये हो रहा है कि टारगेट थेरेपी खत्म होने वाली है, तो इज इट पॉसिबल या फिर ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर जल्दी वापस आ सकता है, या थोड़ा मतलब डिले हुआ है, या मतलब आई नो कोई कुछ ऐसा सर्टेन नहीं बता सकता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को बहुत जल्दी डायग्नोस हुआ, तो वो पहले वाला ही पार्ट था, या इतना जल्दी कैसे हुआ, ड्यूरिंग कीमो कैसे पॉसिबल है. तो मैम इस वजह से मैं पूछ रही हूँ कि अगर टारगेट थेरेपी अब जैसे 4 साइकिल बचे हैं, तो क्या मतलब आंसर करती हूँ आपका, जल्दी आंसर करती हूँ आपके क्वेश्चन को, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम. सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. सो टारगेट थेरेपी ऑन है अभी, और कैंसर क्या वापस आ सकता है? तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड बाद में करती हूँ. पहले आंसर करती हूँ क्यों कैंसर वापस आ गया इतनी जल्दी. So that is where stage and biology are two things. This is what I have been saying right from the start. कि स्टेज एक चीज है, बायोलॉजी एक चीज है. एक छोटा सा भी लीजन कैन बी मिस्चिफ मेकर, वो बदमाशी कर सकता है, बाद में
जल्दी वापस आ सकता है, because what is contained inside that tumor, that is what your doctor is telling you to go ahead and understand. उसको आप समझ करके ट्रीट करना। ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आप ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं। जब आप उसके बायोलॉजी को समझ जाएंगे, HRD पॉजिटिव है कि नहीं, ब्राका पॉजिटिव है कि नहीं, then you have more informed data of what are the chances of responding to this medicine versus any other. और आगे जाके मैं और भी बोलूंगी, बिकॉज क्लियर सेल है सिर्फ HRD नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, बिकॉज रिलैप्स डिजीज। सो रिलैप्स डिजीज में यू कैन इम्प्लीमेंट better therapy, more nuanced treatment to what you find out in the comprehensive genomic profiling. So test तो कर ही लेना चाहिए, treatment तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, but test आपको कर लेना चाहिए so that you can strategize your maintenance better. When you go off the IV maintenance, is there something oral that will also keep you secure and prevent the disease from coming back? So I would encourage you to do the testing. Thank you very much, Dr. Sewanti, for that one, a very detailed talk. You know, your talk as usual. But I most in that our patients are empowered. Time when patient would say, "आप बताइए वो हम करेंगे." It was such an uncomfortable thing for us as doctors, because it's putting us and also all the responsibility. I think it's amazing for patients from reading, learning new things, and understanding, and then putting everything together. And I really like how you put across as to एक कैंसर का मेन बात, बट बाकी भी बहुत गली करके उस नाकाबंदी करानी है। नाकाबंदी हमारे पास अलग ड्रग्स है, तो you know, comprehensive test is what we would recommend. As you said, you know to know our enemy. बाहर अगर करके ये काम वाला नहीं है to hurt. So I really thank you for this talk, and any more questions आप डायरेक्टली किसी को ईमेल कर सकते हैं, मैंने एड्रेस दिया है, या So आप your मुझे voice is breaking a little bit. Your voice is breaking a little bit. is this better now? Slightly better. Slightly better. I don't remember that one. So Dr. Sewanti का So much better. का मैंने ईमेल एड्रेस दिया है सेक्रेटरी का, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं डॉक्टर सेवंती के पास वो लेके उसके सारे आंसर्स आपको भेज दूंगा। So thank you very much everyone for joining. Unfortunately because of setting आज बात ज़्यादा नहीं हो पाई, पर अगली टाइम मेज़बीन क्या प्लान है हमारा? So next time we are planning to do on brain health. So how to take care of our brain in terms of all the activities that we can do, in terms of how to increase our memory power and a little brain gym. So that's our plan for the next month. Excellent. And that's something I really needed. My brain is already getting fried with all these things. You know, I have one of my major problem in life is I cannot remember anybody's name. तो वो मेज़बीन का भी नाम इतना डिफिकल्ट नाम है उसका, वो याद करने के लिए मुझे तो 1 साल चला गया। वो क्या है, वो कौन है वो लड़की टाइप्स होता है। So I look forward to next month's meeting. So thank you very much for joining. Send in our questions. I'll make sure that they get answered, and I'll also send you a YouTube link of today's meeting. So if you have missed it, or if you want to send it to your friends or family who may be interested, please feel free to do so. I also want to just acknowledge, where is he gone? No, I think Vinodji was here, but I don't see him anywhere. Anyway, so bye-bye, and thank you very much. Enjoy your weekend. We'll see you next month. Thank you for having me. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.